Citizen Mentors, my name is Ketan. I always get this query saying that what are the best options that we have as far as the PGDM is concerned or PGDM is concerned. Now, so there are multiple options that people have through multiple examinations, like you've got ATMA, you've got CMAT, you've got CAT, you've got ZAT, you've got CET as well. But again, the problem is that every college is not going to take CET. For example, अगर हम बात करेंगे all India level पे अगर बात करेंगे तो definitely you will be having plethora of options, right? But again, it doesn't make any sense that you can apply for every college because it increases your cost, like because you will have to pay for every colleges का every form that you buy, right? तो वहाँ पे बहुत सारा investment हो जाता है. तो मेरे ख्याल से जरा गिने चुने colleges which are really good. तो अगर तुम्हें बॉम्बे लेवल पे बात करो, definitely JB और सिडनम इनका PGDM है नहीं. They have this MMS program which is run by the government. It's the university program under Mumbai University. Now, बहुत बार मुझे बच्चे पूछते हैं कि सिडनम में PGDM करके कुछ तो है जिसके 60 सीट्स है मेरे ख्याल से. तो यार वो नाम है, it's a nomenclature which is PGDM something like that. बट पूरा का पूरा फंडा MMS वाला ही है, राइट? उनकी अलग से इंटरव्यूज नहीं होती है, ये सब कुछ नहीं होता. सिंपल है, सीटी में मार्क्स आया, कैप के थ्रू आपका एडमिशन होता है, डन अंडरस्टूड. अब जब पीजी के बारे में बात करते हैं तो मेरे ख्याल से पीजी में ज्यादा एडवांटेजेस है आपको इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल. अगेन आई एम गोना एक्सप्लेन दिस टू यू स्टेप बाय स्टेप. तो जेबी सिडनम तो चला गया. अब बात करेंगे केजी सोमैया की. नाउ केजी सोमैया के साथ इस बार एमएमएस है नहीं, तो जो बच्चा एमएमएस के लिए जा रहा है बेसिकली उसको अभी पीजी का फॉर्म भरना पड़ेगा. नाउ केजी का ड्रॉबैक एक है कि इनकी कट ऑफ थोड़े ज्यादा हाई है, दो डाउट. मतलब सीमेंट की बात करेंगे तो 99% आई. अगर मैं बात करूं कैट राउंड अबाउट 85 to 90% आई, या फिर 88% इज अ गुड वन. अगर मैं बात करूं जैट की सो राउंड अबाउट 75% आई, राइट? तो यहाँ पे ये एक चीज आती है कि जहां पे इनका कट ऑफ ज्यादा होता है. बट अगर मैं एक एवरेज लेवल पे बात करूं, अगेन कन्वर्जन के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो कन्वर्जन का भी कट ऑफ इनका थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा ही होता है. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट कॉलेजेस लाइक लेट्स से वेलिंगटन, राइट? I think it has more advantage. So I'll get back to Wellington a little later. Let's understand at the same level what all colleges you have. You've got GYM, you've got TACME, you've got NIA, you've got NIBM. Now definitely जब हम GYM के बारे में बात करते हैं, fabulous college, no doubt about it. इसका थोड़ा सा problem है ROI पे because fees बहुत ज़्यादा high level पे है. Then you talk about TACME. TACME के भी कुछ programs अच्छे हैं. They have separate program for HR, doing amazingly good. Some of my students, they got converted into KG Somaiya. They dropped KG Somaiya. They wanted to do HR. They went for TACME का HR because the numbers, the profiles are amazingly good. Now, इसलिए बाद अगर हम बात करते हैं for student जिसको ज्यादा परसेंटाइल पे नहीं चलना है बट प्रोफाइल अच्छी है या फिर कुछ ना कुछ आपके प्रोफाइल में अच्छी बात है. So there is a college which is Wellington. The best thing about Wellington is that ऑप्शन ज्यादा है. दो कैंपस है आपके, राइट? आपको दो कैंपस मिलते हैं, बॉम्बे का एंड बैंगलोर का. उसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज्यादा है. प्लेसमेंट्स अम्ब्रेला होती है, कॉमन प्लेसमेंट्स होती है. सो लेट्स सी वी गेटिंग इनटू केजी सोमैया, राइट? You will be having a couple of options. Likewise, you will be having options in Wellington also. So they have PGDM Pro, which is core. It's a PG core they have. They've got e-business, they've got business design, they've got healthcare, they've got business analytics, they've got rural management, retail management, and the cutoffs are going to be on a very low level. So low level cutoff का मतलब ये है, it is not that the college is not good because they are keeping low cutoff. ऐसा नहीं होता. The point here is that these guys are giving priority towards profile, right? तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 80-90% आए हैं मतलब आप अच्छे बच्चे नहीं हो. नहीं, ऐसा नहीं होता. It's just that day didn't work out for you and you got a little bit less percentile. But if you have a good profile, then you can definitely target for all these colleges that I just named now. Okay, now coming back to Wellington, right? तो इनका कट ऑफ अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 75 plus is a good cut off in all the exams as far as Wellington Bombay is concerned. और let's say Wellington Bangalore is also concerned, right? मेरे ख्याल से इनका राउंड अबाउट 80-85 भी चलता है कुछ एग्जाम्स के लिए. अब यहाँ पे भी ये बात होती है कि यार आपका कॉल आने का कट ऑफ एक होता है एंड कन्वर्ट करने का कट ऑफ अलग होता है. बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर इंटरव्यू प्रोसेस. It all boils down to how did you perform and what's there on your profile. So let's say you are somebody who's got 80-85%, but you are coming up with like 3 years का work ex, 2 years का work ex, और अभी कोई भी एनर्जी नहीं है कि यार और एक बार कैट के लिए ट्राई करें. Then can Wellington act as a good backup for me? Absolutely yes, because
you have a good work ex वहाँ पे, so that if you perform very well in your interviews, you can actually convert that. Now this is what I am looking at on a very much holistic level. कि यार आपको PG option मिलता है, retail मिलता है, rural मिलता है. On the other side, if somebody is there who really wants to do well in finance, then definitely I would advise you to kind of go for Dalmia. That's again a kind of a different level altogether. So Wellinger के बाद in Bombay you have SIS, you've got Dalmia, you've got Chetna, you've got MED, you've got IS. बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके खुद के पीजी के प्रोग्राम्स हैं. अभी बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो सीईटी एक्सेप्ट करते हैं. वेलिंगर लास्ट ईयर तक अपने पीजी प्रोग्राम के लिए सीईटी लेता था, अभी उन्होंने वो बंद कर दिया है. एंड उन्होंने बंद इसलिए किया है बिकॉज यू नो सीईटी इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल एज फार एज द प्रोसेसेस आर कंसर्न. एग्जाम तो है ही है बट इनके प्रोसेसेस थोड़े से वियर्ड है. लास्ट ईयर देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज विद सीईटी, सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, दे आर एक्चुअली एंड लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस. A lot of good colleges are now actually coming out of CET. अगर आप बात करेंगे केजी सोमैन की, केजी सोमैन ने तो CET बहुत सालों पहले स्क्रैप करा था अपने पीजी प्रोग्राम के लिए. अब उन्होंने एमएमएस के लिए भी स्क्रैप कर दिया बिकॉज नाउ दे आर द यूनिवर्सिटी. अब वेलिंगटन ने पीजी प्रोग्राम के लिए स्क्रैप कर दिया. यू नेवर नो, शायद से एमएमएस के लिए भी स्क्रैप कर दे 2-3 साल के बाद. सो यू नेवर नो, राइट? सो इट्स अ गुड मूव आई वुड से. So that you know, I mean, like people who are not going for CET can have an advantage because if you're scoring well in CETMAN, ATMA, ZAD, you know, in other exams, you can directly apply to Wellinger. Now, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप CET देते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है. Yes, you have better options. Rather, I would say you have decent options, which is SIS है, दालमिया है, रिजवी है, बाकी के कॉलेजेस भी है. तो मेरे ख्याल से जब हम PGDM कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, you need to understand आपका प्रोफाइल किस लेवल का है. आप अगर उस कॉलेज में जाते हो, what kind of jobs you're looking at. For example, अगर आप वेलिंगर बैंगलोर के बारे में बात करेंगे, if you're somebody who's coming up with the IT profile like 1.5 or 2 years का work ex or maybe 3 years का work ex and would love to work in Silicon Valley of India, which is Bangalore, and if you really want to get back to IT company in their BFSI sector or whatever, Wellinger Bangalore can be a fantastic option for you. Then you can kind of you know ignore a couple of other colleges and then you can kind of apply for SIBM Bangalore because that college is amazing. I was given the opportunity to be there as a panel discussion member, and when I was there, we interacted with the staff, we interacted with you know the dean also. It's a fabulous college. And the one thing that I really loved about that campus is that they give time to students basically. So if you require, your faculty is going to sit down with you and mentor you. Having less number of students in Bangalore, Wellinger, it actually helps them to produce quality placements. तो ये भी एक एडवांटेज है जो आप देख सकते हो. अगर वहाँ पे कोर्सेज भी अच्छे खासे हैं, तो दैट्स द गुड थिंग. सो यू कैन टारगेट केजी सोमैया, वेलिंगर का लास्ट डेट मेरे ख्याल से 14 फरवरी है. एक बार चेक कर लेना. इट्स अ फैबुलस थिंग. एक दूसरी चीज है कि इनका जो जीडीपी है मेरे ख्याल से मुंबई लोकेशन का जो जीडीपी है वो होगा 14th and 15th मार्च को. अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वहां पे सीईटी भी है आपकी, तो अब उसको पहले दे सकते हो. 14 को अगर आपका स्लॉट है, 15 को जाओ, 15 को अगर आपका सीईटी है तो आप 14 को कर लो, राइट? बट दैट्स समथिंग गाइस यू नीड टू काइंड ऑफ डील विद. सो यू कैन काइंड ऑफ थिंक अबाउट कपल ऑफ कॉलेजेस व्हिच इज जिम. अगर मैं बात करूं जिम एंड वेलिंगर की, अगर मैं आरओआई के बारे में बात करूं, आई वुड लव टू चूज वेलिंगर बिकॉज ऑप्शन ज्यादा है एंड अगेन मुझे लगता नहीं उसमें कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस है, राइट? समथिंग लाइक दैट. फाइनेंस, दालमिया, हैंड्स डाउन, नो डाउट अबाउट. सो गाइस, जहां तक पीजीडीएम का बात है, आपके परसेंटाइल देखो, आपकी प्रोफाइल देखो, लोकेशन देखो, आरओआई देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि यार मुझे ये कॉलेज चलना है, ये कॉलेज नहीं चलना है. देन यू कैन स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म सो दैट यू आर काइंड ऑफ फोकस. यहाँ मुझे यही कॉलेज में चलना है, मुझे हर एक कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना है आउट ऑफ डेस्परेशन. सो गाइस, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई टू वर्क योर वे आउट. जो भी कॉलेजेस मैंने यहाँ पे बोले हैं, दे आर ऑल डिसेंट इनफ, दे कैन गिव यू अ गुड किक स्टार्ट. I will be making other videos kind of you know on the same level, so I hope this video helps you, and if you have any question, any queries, you can put the comment on this video. And that's it from my side, guys. Thank you so much.